Okay, so today we are going to discuss about some examples of point groups. Uh, Till now, we have discussed the point group. Those are started with C letter, but now we will discuss the point group. Those are started with D letter. So if there is any subsidiary axis present in the molecule, its name starts from D, not from C. So if you have a molecule and it has principal axis as well as it has subsidiary axis also, then we have to start its name by D letter, not from C. If you have, for example, BF3, as we have discussed BF3 molecule, in BF case of BF3, there is C3 principal axis and there are three C2s present in that BF3. So the point group for BF3 will be started from D letter, not from C letter. So this thing you have to keep in your mind always, that if there is any subsidiary axis present in the molecule with principal axis, then we have to start the name of that point group from D letter, not from C. So in this context, the first example is triethylene diamine cobalt third plus ion. So if we consider this example, or if we want to find out the point group for this example, so first we have to see the structure. So its structure is like this. The central position is occupied by cobalt. Okay, the central position is occupied by cobalt atom. Then it is octahedral geometry. So it has 6 bonds and equatorial bonds. Two equatorial bonds are occupied by one ethylene diamine molecule. Similarly, another one equatorial bond and one axial bond is occupied by or bonded by ethylene diamine. Similarly, one equatorial bond and one axial bond is bonded by ethylene diamine molecule. So now let's find out the point group for this molecule. So if we see, or if we want to check the principal axis present in this molecule, so we will consider this an imaginary axis present in this molecule, and that is passed through central cobalt atom as well as two axial bonds. Okay, so this axis is known as C3 axis. Now C3 axis कैसे होगी इसमें? So that we have to check. C3 means 120-degree rotation. 120-degree rotation means after third rotation this molecule must get identical structure. So if you see this molecule, then you can see that this axial, just consider this axial bond, this equatorial bond and this equatorial bond, this and this. So it looks like BF3 molecule. This and this. So it looks like just BF3 molecule. So we can consider C3 axis. So if we consider C3 axis, then after rotation, this bond are shifted here, this bonds are shifted this side, back side, and this bond is shifted this side. So we can consider C3 axis. Okay, now we have to check subsidiary axis. Subsidiary axis means C2 axis. So this with this direction means two axial bond and one central atom cobalt. If we pass an imaginary axis through these three atoms, one nitrogen of ethylene diamine
located at equatorial position, one central cobalt atom and one another equatorial nitrogen of ethylene diamine. So if we consider this imaginary axis, then after 180-degree rotation, so this bond will be shifted here, this bond will be shifted here, and we will get equivalent orientation. So that's why we can say yes, it has C2 axis. So the trick which says if there is any C2 present, then we have to use the trick. So principal axis n value is 3. So that's why it has 3 number of C2 present in the molecule. So now we will go for plane. First vertical plane sigma v. So and sigma v must be parallel to principal axis. So we have to put the plane from here only, like this, because it must be vertical plane. It must be uh, parallel to principal axis, and principal axis is this is black line. This is C3. So it must be parallel to this principal axis. So if have to pass this, we have to pass the plane parallel to this 3 C3 principal axis. So if we consider the plane in parallel to C3, then we will see that there is no equivalent orientation after reflection through this plane. How? So just see, if we are putting a plane here, then this nitrogen, these two bonds of nitrogen of ethylene diamine will be reflected this side. This side means in front of us, but there is no nitrogen. So what is the condition? Plane of symmetry. What is the condition of plane of symmetry? Atom must be replaced by the same atom. So if we put vertical plane, then this nitrogen will be reflected opposite direction, and there is no nitrogen. So that's why we can't consider the vertical plane. Now we will go for horizontal plane, whether horizontal plane is present in this molecule or not. So horizontal plane is always perpendicular to principal axis. So we have to pass a plane like this. Mouse cursor, just see the mouse cursor. So we have to pass the plane here only. So if we pass, then this nitrogen will be reflected here. It's okay. Okay, this hydrogen will be reflected in back side, not in front side. These are in front side. But this exile nitrogen will be reflected here. It's okay, exile and exile. But this is in back side and this is in front side. So we have to put the plane here only, like this. So it will be reflected in downside, but there is no nitrogen. It will be reflected in downside, but there is no nitrogen. So that's why we cannot consider this plane. Horizontal plane can also not be considered for this molecule. Okay, so there is only C3 principal axis, and there are three C2 principal subsidiary axis. So E is by default, so it falls in the category of Dn, and it has E, Cn, and n number of C2. So the point group of this molecule will be D3. ये मॉलिक्यूल है एथिलीन डायमीन, 3 एथिलीन डायमीन है और एक कोबाल्ट एटम में कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि दो इक्वेटोल एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, दोनों नाइट्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में NH2 CH2 CH2 एंड NH2। तो दोनों नाइट्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक मॉलिक्यूल जो है इथाइलिन डायमीन का, ऐसे 3 है टोटल, यानी कि टोटल 6 नाइट्रोजन हो गए। तो एक मॉलिक्यूल तो इक्वेटोरियल पे बना रहता है, इट्स ओके, दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल पे बनाता है। बट एक दूसरा जो इथाइलिन डायमीन का जो मॉलिक्यूल है, उसमें से एक नाइट्रोजन एक्साइल पोजीशन पे कनेक्ट रहता है और दूसरा दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सिमिलरली तीसरे एथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन इक्वेटोरियल से कनेक्ट है, बॉन्डेड है, एंड दूसरा एक्साइल से। सो पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू चेक द सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो ई तो डिफॉल्ट सब में प्रेजेंट होता ही है। ओके, सो ई तो इसमें प्रेजेंट होगा। अपन अब प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखने के लिए अपने को इस मॉलिक्यूल को थोड़ा
BF3 जैसे कंसीडर करते हैं, ये दोनों एक्साइल वाला है और ये सॉरी दोनों इक्वेटोरियल वाला है और ये एक नाइट्रोजन एक्साइल वाला। सो ये माउस क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा, ये एक BF3 जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो BF3 में कौन सा होता है, C3 एक्सिस प्रेजेंट होती है। अब अपने को C3 एक्सिस पुट करेंगे और देखेंगे कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन वी आर गेटिंग और नॉट। सो अगर अपन यहाँ से एक्साइल पोजीशन पे एक एक्सिस पास करते हैं और इसको रोटेट करवाते हैं 120 डिग्री एंगल से, सो क्या होगा, ये दोनों जो है इक्वेटोरियल वाला है, ये दोनों जो है इक्वेटोरियल वाला है। अब क्या हुआ, ये जो दोनों है ये यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ चले जाएंगे और ये दोनों यहाँ चले जाएंगे, यानी कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन तो अपने को मिल जाएगा C3 से। तो दैट्स व्हाई इट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपने को सब्सिडियरी एक्सिस यानी कि C2 एक्सिस चेक करना है। तो C2 एक्सिस के लिए दोनों एक्साइल नाइट्रोजन और कोबाल्ट के बीच से एक अपन एक्सिस पास करते हैं। ओके, अगर ये एक्सिस अपन ने पास की तो क्या होगा, आपको पता है कि C2 में 180 डिग्री का रोटेशन होता है, इसका मतलब अपोजिट हो जाती है डायरेक्शंस। तो जैसे ये इस एक्सिस को अपन पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों तो इस साइड आ जाएंगे नीचे और ये दोनों ऊपर साइड आ जाएंगे और ये दोनों तो सेम साइड ही रहेंगे। ओके, सो अपने को क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल जाएगा। अब चलेंगे अपन पैरेलल प्लेन यानी कि वर्टिकल प्लेन पे। अब वर्टिकल प्लेन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि ये पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस अपनी कौन सी, ये वाली ब्लैक। तो इसके थ्रू ही यानी कि इसके ऊपर ही अपने को एक प्लेन पास करना है। अगर इसको अपन प्लेन पास करेंगे तो ये तो ठीक है, चलो ये वाला जो एक्सल पोजीशन है इसके बीच से रिफ्लेक्ट होगा और ये दोनों आपस बीच से कट होगा और ये दोनों नाइट्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। बट ये जो नाइट्रोजन है ये क्या इस साइड रिफ्लेक्ट करेंगे यानी कि अपनी साइड, अपने फेस की तरफ। लेकिन इस साइड वापस कोई दो नाइट्रोजन है ही नहीं अपनी फेस की तरफ, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स वाई अपन इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए कंडीशन क्या होती है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से एक प्लेन जाना चाहिए, इसके जस्ट बीच से इसको बाइसेक्ट करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को। अब यहाँ से अगर प्लेन डालेंगे तो ये दोनों तो चलो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इट्स ओके। बट होगा क्या, ये जो है एक्साइल और नाइट्रोजन ये क्या है, ये नीचे की साइड यानी कि बैक साइड में रिफ्लेक्ट होंगे, और अगर बैक साइड में रिफ्लेक्ट होंगे तो बैक साइड में तो कोई नाइट्रोजन है ही नहीं। और ये दोनों क्या अप साइड में ऊपर की साइड अपनी तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, तो यहाँ पे भी कोई नाइट्रोजन नहीं है। सो दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल प्लेन भी वी कांट कंसीडर। सो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट हो गया, C3 प्रेजेंट हो गया, 3C2। अब इसमें अपनी कंडीशन क्या है कि अगर 3C2 यानी कि सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट है तो अपन पॉइंट ग्रुप को डी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, कैटेगरी कौन सी हो गई, DN की। क्यों क्यों, बिकॉज इसमें ओनली CN प्रिंसिपल एक्सिस और N नंबर ऑफ सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है। दैट्स वाई इसका पॉइंट ग्रुप हो गया D3।